Yeah, finally. Hi Satya, good to see you finally. Hi, hi. Hi. So we have been in touch for a lot of other things lately, but yeah, good to see you here. Uh, okay, people will just start. So this is our third conversation on an 8,000 meter peak back to back in live. First, we started with Mount Annapurna that was taken by Rumbil and Bharat, and then we had discussion on Mount Dholagiri last Thursday, and then we have Kanchenjunga. Kanchenjunga and Annapurna, these are the two big 8,000 meter peaks that BNC did in the calendar 2022, and we are obviously doing more this year, but these two were somehow, you guys were out there in the wild, in the expeditions, and we obviously heard very little updates, and ikka dukka thoda sa sunne ko milta hai, like, okay, there's one sort of a message sneaking in from somewhere from the camp, what is happening, and then when we came back, obviously a lot of other things were happening, so these two sort of didn't really make the noise that they were supposed to. But I think the stories were, nevertheless very inspiring, and that will continue and live on forever. So I think we're just bringing a bit of that out here in this live with Satyadeep Gupta. Thank you for joining. Thanks. He was part of the team that was there for the Annapurna and Kanchenjunga, led by Bharat. And I'll 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 let you introduce yourself a bit, and then also on how it all started for you, like we discussed yesterday. If you can share that, yes. Yeah. Thank you, Chetan, for inviting me this conversation. And hello, guys. Hello, friends. I'm Satyadeep Gupta. Like people call me Satya. Satya usually is more famous. And I'm an engineer by profession. I sail on merchant ships. Like I've been doing that for past many years, like 15 years. I've not done it since last 2 years, like uh, on a break. And yeah, and I'm doing mountaineering from past 7 8 years. Apart from mountaineering, I also do skydiving, but that has taken a backseat right now, and like more focus is on mountains. And regarding how it started, it's like it's an accident. I mean, there was no plan. 10 years back, अगर मेरे से कोई पूछता कि आप माउंटेनियरिंग करेंगे तो मैं शायद हंसता कि लाइक नहीं ऐसा कभी नहीं होने वाला है. But yeah, it started and it sucked, and I'm feeling pretty good about it. And good in the sense like I have not been on job from last 1.5 years and so, and but yeah, I'm still very good. So mountaineering started from Himachal. Like Himachal, I have friend circle, and interesting story basically. Like one of my friend was about to get married and all, and he was ki, "Arey, we need to do some trekking and all." So I was like, okay, yes, we'll go on treks. And it was March. Now we had no idea because this is our first trek. We had no idea that March is not the correct season to go in mountains. And we were all free and like, okay, we decided we found a Minkyani pass. It's a small 4,000 meter pass. We start from Dharamshala and we cross over the pass and we reach Chamba. So we started March and we reached the bottom of the Minkyani pass, the Kareri lake. And next day morning, 7 o'clock and all, we started going up the mountain. Now, now we had no idea. We had our tents which were not for snow, and we didn't have snow compatible shoes or anything. We were just walking with like woodland shoes and all. We reached the top of Binkyani Pass, and then as far as I can see, जहां तक हम देख पा रहे थे वहां तक बर्फ ही बर्फ थी. And we were like, अरे अब मतलब कैंप तो लगा ही नहीं सकते हैं, and somehow we have to cross it. हमें वो बर्फ क्रॉस करके उधर ही पहुंचना है, ये एक सोल्यूशन है. Right. और फिर हमने चलना चालू कर दिया. तो चलते चलते मतलब रात को 1 बज गए. सुबह 7 बजे से चल के हम लोग रात को 1 बजे फाइनली कैंप साइट पे पहुंचे थे जहां हमको पानी मिला और हमने कैंप लगाया. सो ये मेरा पहला ट्रैक था जो कि मतलब 17 18 घंटे हमें कंटिन्यूस चलना पड़ा था. एंड दैट इंट्रीग्ड मी. उसने एक इंटरेस्ट जगाया कि यार ऐसा भी करते हैं क्या लोग, मतलब इतना लंबा चल के और ऐसा क्यों करते हैं. सो आई स्टार्टेड लुकिंग इनटू इट कि अरे लेट्स मतलब कुछ करते हैं.
and then I wanted to do some expedition. So I went for I searched on internet, simple one like Kilimanjaro. सब लोग उसमें था कि Kilimanjaro is good for starting and all, and वहाँ पे Africa is a good place to for vacation also. तो हम लोग वहाँ पे फिर Kilimanjaro करने गए, Right. and that again was pretty challenging at that time क्योंकि हमें idea नहीं था, and we made many mistakes. मतलब पहला तो कि हमने जस्ट सर्च किया गूगल पे और जो चीपेस्ट गाइड हमें मिला वो हमने ले लिया. हमने ये नहीं देखा कि उसमें क्या बैकग्राउंड है या क्या है, एंड वी जस्ट टुक इट बिकॉज पैसे ज्यादा थे नहीं. तो वो लिया, एंड आई ब्रॉट माय ओन टेंट, माय ओन स्टोव, फूड, पैक फूड फ्रॉम इंडिया. वी हैड एवरीथिंग आवरसेल्व्स. सब कुछ हमारे पास था. तो इट वाज लाइक ओके, वी रीच कैंप 2, एंड देन रात में बारिश चालू हुई और हवा भी बहुत तेज थी, और उस समय पता चला कि हमारा टेंट जो है वाटरप्रूफ नहीं है. एंड वी आर लाइक कि नाउ व्हाट. रात में हम लोग मतलब 12-1 बजे उठ के बैठे हुए हैं टेंट में और पानी अंदर आ रहा है, एंड नाउ वी आर आस्किंग लाइक नथिंग कैन बी डन. तो हमारे पोंचू वगैरह थे वो हमने जैसे तैसे कवर किया, रात निकाली, एंड वी कंटिन्यूड अप द समिट. क्योंकि हमने कोई स्पेयर डे नहीं था हमारे पास, हमने सिर्फ 5 या 6 दिन का परमिट लिया था, तो हमें तो जाना ही था ऊपर. तो हम लोग चल के ऊपर गए. फिर समिट वाले दिन भी बहुत बुरा वेदर मिला. तो वी रीच स्टेला पॉइंट, और स्टेला पॉइंट के बाद गाइड सेड कि नहीं बॉस आगे नहीं जा सकते. एंड आई वाज लाइक यार विंड बहुत तेज थी. बेसिकली आई हैव दोस वीडियोस, विंड वाज प्रीटी स्ट्रांग. Okay. एंड आई सेड कि मतलब हम लोग रोप वगैरह यूज कर सकते हैं ना. तो ही सेड नो वी डोंट हैव एनी रोप और एनीथिंग. आई वाज लाइक ओके. तो फिर we came back. So these two, basically they like, okay, I didn't reach the goal which was planned, but they, sparked a curiosity in me कि अरे mountaineering itself is a sport, मतलब ये भी कुछ है, तो इसे सीखना चाहिए. Right. And then I started off like with my basic course from NIM I did, and my advanced course. Okay. I did those courses. Okay. And after that we did more treks, Everest Base Camp, and Mount Noon. Mount Noon was again very like a different kind of story. Right. And after Noon we did, I met Bharat. We did with Boots and Crampons few expeditions, and last year we went for Annapurna and Kanchenjunga. So yeah. ठीक है. तो या आई थिंक आपका जो अभी तक एक्सपीरियंस बताया नून के, उस पे भी आएंगे व्हाट हैपेंड, बिकॉज आई थिंक वन एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो मैंने कल सुनी थी आपसे व्हेन आई वाज डिस्कसिंग दैट टेक्निकली Minkani Pass was like a pass, it's not a peak, but उसके बाद if successfully you sort of reached a top of a peak, that was straight Kanchenjunga straight after that, and बीच में काफी journey रही है. So what I जो viewers हैं, and these viewers are basically people who are seeing us, they are trekkers, they are people who want to do something outdoors, they are they've just starting to trek, कुछ runners हैं. So how do these failures or these experiences have sort of forged this आपका this thought within you that नहीं like अभी आपने जैसे बोला कि एक spark आई कि mountaineering भी एक चीज है, सीखनी है, but your friends may have not felt the same way. So what was those few things or one thing that you held on to? आपने बोला कि नहीं, I would still continue to doing it. Failures or experience or ये सब चीजें is part of the process. So just a bit about that. Yeah, actually the thing is like failures तो होने ही हैं. मतलब basically me personally I'm never like very much attached to the summit. My main focus is कि I'll give my 100%, and every mountain is like that. मैं अपना पूरा कोशिश करता हूँ. Whatever I can try, I give 100% to it, and if summit happens, it's good. If it doesn't happen, like I won't be very in a very unhappy or like frustrated sort of shit. I don't do that because I know I put my 100% effort and that is it. उससे ज्यादा हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं. अब जब उससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं तो फिर कोई सेंस नहीं बनता है कि अनहैप्पी होने का, बिकॉज आउटकम मेरे हाथ में है ही नहीं. I mean, it might sound a little philosophical, but this is the fact.
आप ऊपर पहुंच जाएं, वेदर खराब हो गया, कोई कुछ नहीं कर सकता है। या राइट मेरे साथ मतलब मैंने तो बहुत चीजें अब देखी हुई हैं, अगर हम लोग अभी शेयर करेंगे तो ऊपर जाके मतलब बिजार इंसिडेंट्स हो रहे हैं जो कि मेरे कंट्रोल में नहीं है। सो इट मेक्स नो सेंस। बेसिकली इट्स नॉट ए फेलियर। फेलियर मैं तब होता कि या तो मेरी ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं थी एंड मेरे अपने एफर्ट्स में मुझे कमी दिखती, देन आई वुड रिगार्ड इट एज ए फेलियर। बट इट्स नॉट ए राइट फेलियर, इट्स अ लर्निंग कर्व बेसिकली। एंड दैट लर्निंग कर्व इंट्रीग मोर कि मैंने मिनक्यानी किया, उसके बाद मैंने किलिमांजारो किया, फिर मैंने सोचा यार कुछ और बड़ा करते हैं, राइट because Kilimanjaro also okay I reached and weather didn't permit us to go any further. Okay, and few more mistakes, that is like वो तो होना ही है because that is what gives us experience. जिसने mistakes नहीं किया उसने like he didn't learn anything basically. My funda is like that. तो आपकी mistakes तो होनी ही है, but yeah, and people I see whom I see with me like they make the same mistake. They are too much attached. मतलब नहीं हुआ तो वो लोग सोचते हैं कि बस हमें नहीं करना है यार, ये हुआ ही नहीं, ये तो होता ही नहीं है। नहीं, बट यू हैव टू फाइंड कि क्यों नहीं हुआ एंड देन यू हैव टू ट्राई अगेन। व्हाट्स द बिग डील? वेरी इंपॉर्टेंट। माउंटेन तो वही है। यस ट्रू। सो या आई थिंक दैट्स द मेजर डिफरेंस। Like I always my focus is on the journey. Like always try. That's it. Whether I reach or not reach, and that giving your best. Yeah, always like in any mountain. Even like जैसे हम नून की बात करें, आप नून का टॉपिक था, तो नून is like नून is a difficult mountain. It's not like you know, it's not like trekking or anything. It's serious mountain, 7135 meters. तो उसमें भी जैसे हम लोग जा रहे थे एंड वी रीच्ड कैंप 1, तो हम लोग 4 क्लाइंबर्स थे, तो कैंप 1 पे 2 लोग वापस हो गए, फिर 2 लोग बचे, मैं और एक इटालियन क्लाइंबर थी, she and me. We started climbing. We reached camp 2 and my Sherpa, like his helper fell sick, so he couldn't help him belay the rope and all. So like Sherpa was saying कि you belay the rope and I'll fix the rope. And then I thought यार route किसके लिए fix करना है? Like we are just 2 climbers. If I am belaying the rope, I might as well we climb without fixing the rope itself ना. Rope fix ही क्यों करनी है? And that is how like after camp 2 we started climbing Noon without fixed ropes. We reached summit camp, but the condition of that guy, that helper, like went from bad to worse, and it was highly risky to leave him alone at the camp. We cannot do that. Right. So at summit camp we like decided, okay, no worries, we'll go back. So again that was like he was hallucinating and all. He was drinking tea like this without a cup in his hand. So yes, his condition was not good at all. Right. But then again, that taught us many things. Like that taught me how to work without fixed ropes and with ice axe. Like few places we fell, I stopped myself with the ice axe and all. Like everything teaches you. That's it. Right. Otherwise, now if I hang on to it कि अरे submit नहीं हुआ, then things won't work that way. True. आगे नहीं बढ़ सकते हैं. Right. Yeah. Okay, a few people are sending questions. Guys, we'll take questions at the end. Abhi we are just carrying on with the discussions. I'm taking note of your question and then I'll ask Satyadeep after that. Now, you know, एक चीज मेरे मन में थी and something that people who are starting off, whether they are mountaineering में starting off or whether they're trekking में they are starting off, is to like the kind of mistakes or the kind of जैसे आपने कहा कि learning process का part था आपने initially, you know, how do you choose your organizer? कि आपको as a beginner आपको क्या देखना चाहिए? What are the things that you should make sure that so that you're going to the with the right people? Right. Now this is very important actually, but best option I tell you is to go with a referral. Like अगर आपका कोई दोस्त हो, आपको जानने वाला हो जो किसी से जिसके साथ गया हो ऑर्गेनाइजर्स के साथ, and he knows they are good and you can trust that guy, so it's best कि वो आपको अच्छा सजेशन देगा और आप फिर उनके साथ जाएं. और मतलब ये कभी ना देखें कि we have to go with the cheapest. वो सही अप्रोच नहीं है. I have like you know I have faced those things. Believe me, that is not the right approach. I'm not saying कि people who are giving it for cheap they are not good. I'm not saying that, but yeah, try not to do that. Sometimes you know, especially in mountaineering, trekking, no, cheap is not the best option. So
रेफरल हो बहुत अच्छा है, बाकी आप थोड़ा रिसर्च करिए उनके बारे में। और ऑफ कोर्स अगर वो एक ऑर्गेनाइजर है, कंपनी है, तो बहुत लोगों के साथ गए होंगे, यू फाइंड आउट, आपका एक सर्किल होगा, उसमें किसी ना किसी ने तो उनके साथ किया ही होगा। Right. सो इट्स लाइक ट्राई टू नो योर ऑर्गेनाइजर बिफोर गोइंग, बिकॉज अल्टीमेटली यू आर पुटिंग योर लाइफ इन हिज हैंड्स। एक्सपेडिशन इज लाइक दैट, लाइक देयर विल बी रिस्क, छोटा हो Right. बड़ा हो एक्सपेडिशन, रिस्क तो रहेगा ही। ठीक. सो बेटर ऑर्गेनाइजर इज ऑलवेज गुड। Right. Yeah. Coming to the last year का जो अन्नपूर्णा कंचनजंगा expedition था, in which you were a part of. A bit about Annapurna. What was the challenge that जो आपने अपने ऊपर लिया? Like you said that you risk लेते हैं, and then this is part of it, and it should be challenging. So how are you making it challenging for yourself? What was that major component? How did that go? Plus Kanchenjunga after that, and then third thing would be how. चलो ठीक है, पहले आई थिंक इसके बारे में बात करते हैं पहले दो, एंड देन वो जो अन्नपूर्णा वाला जो आपने बात किया था उसके देन वील टेक इट आफ्टर दैट। ओके। या लास्ट ईयर बेसिकली ये प्लान 2 साल पहले से था, बिफोर कोरोना। हम लोग 2020 का हमारा प्लान था बेसिकली, एंड दैट टाइम अन्नपूर्णा वाज नॉट इन द सीन, हम सिर्फ कंचनजंगा जाने वाले थे। और शुरू से मेरा कंचनजंगा ही मेरा फोकस था कि मेरे को कंचनजंगा जाना है। अन्नपूर्णा वाज नेवर इन द पिक्चर। अन्नपूर्णा एकदम लास्ट मोमेंट पे 22 आई थिंक जनवरी में डिसाइड हुआ था कि हम अन्नपूर्णा कर रहे हैं, अन्नपूर्णा भी कर रहे हैं, मतलब कंचनजंगा तो कर ही रहे हैं। एंड पहले तो मेरा ये था कि यार आई एम डूइंग 8000 मीटर फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड दैट टू कंचनजंगा इटसेल्फ इज लाइक प्रीटी डिफिकल्ट पीक, एंड उससे पहले हम अन्नपूर्णा भी जाएंगे तो इट विल बिकम मोर चैलेंजिंग। बट समहाउ लाइक यू नो आई thought about it, and I took I think 2-3 months to decide, and finally January end I was all set कि अन्नपूर्णा करेंगे। and then but somehow अन्नपूर्णा का मुझे वो फील नहीं आ रहा था कि I will go for summit or like what to do, because then I thought of an experiment. I thought I'll go Annapurna without oxygen. Now that is yeah, some people might call it a huge like you know race, or some call it crazy, some whatever. लेकिन you have to understand कि that was my goal, to challenge myself, to know till where my body can reach me, and you should also have that confidence कि when I feel that okay boss this is it, I will turn back. ये बहुत जरूरी है। वो जो समिट का जो कहते हैं ना कि समिट फीवर, वो नहीं होना चाहिए कि हमें कुछ भी करके समिट करना है। नहीं नहीं, वो गलत चीज है। अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी टायर्ड है, भाई आपके पास एनर्जी उतनी भी होनी चाहिए कि आपको वापस भी आना है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट गोइंग, यू हैव टू कम डाउन ऑल्सो। सो वो एक मेंटल स्टेबिलिटी मेरे अंदर हमेशा है कि मैं सिचुएशन को अच्छा जज कर लूंगा। लाइक आई नो आई हैव दैट कॉन्फिडेंस कि आई फील आई विल नॉट बी इमोशनली कि नहीं हुआ समिट तो लाइक व्हाट टू डू, आई सिंपली कम बैक। सो दैट वाज अ चैलेंज। आई अटेम्प्टेड इट विदाउट ऑक्सीजन like 5 hours after in the summit window. हम लोग summit camp से चले थे और I think 5 घंटे के आसपास I walked, and then like I was very slow because without oxygen, and more problem was lack of experience. क्योंकि मुझे experience नहीं था कि, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि like my body is good bad या क्या हो रहा है। So but then I came back, and yeah I came back, but it was very good learning curve. Like I learned a lot from Annapurna, lot. Right. And then came Kanchenjunga. Now Annapurna हम लोगों ने सबमिट अटेम्प्ट किया था आई थिंक 27th को, 27th अप्रैल, और 9th मई को हम लोग ने कंचनजंगा सबमिट कर लिया था। तो आपको एक्लेमेटाइजेशन में काफी हेल्प हुआ। एक्लेमेटाइजेशन हमारा बहुत अच्छा था क्योंकि हम अन्नपूर्णा से ऑलरेडी एक्लेमेटाइज थे। बट इवन देन लाइक यू नो पहली बार 8000 मीटर करना, फिर अन्नपूर्णा और कंचनजंगा बैक टू बैक, it started, you know, it plays in your mind कि अरे those are two different peaks and very difficult ones. But हम लोग कंचनजंगा गए, and कंचनजंगा में मेरा decision very clear था कि I'll use oxygen, I'll submit it, that's it, I'll not experiment. So कंचनजंगा like straight away from the word go I was like that's it boss, we are submitting, and it was pretty. And if we talk about Kanchenjunga, now Kanchenjunga is a different mountain. Like
even at staying at base camp is not so like it's difficult even staying at base camp because base camp का terrain ऐसा है कि आपको वहाँ mentally you'll get tired अगर आप ज्यादा देर रुकेंगे वहां पे. उसका terrain plain नहीं है, always on the slope, ऊपर अच्छा, नीचे जाना है. Yeah, मतलब अन्नपूर्णा not is more a a like base camp. yeah base camp itself is like a difficult place to live basically. Okay. हम लोग तो एक दिन रुके थे क्योंकि हम लोग सीधा आए थे अन्नपूर्णा से एंड वी डायरेक्टेड फॉर समिट पुश. वी डिडंट डू एनी रोटेशन और एनीथिंग. Right. उसके बाद जिस दिन हम लोग समिट के लिए निकले तो वहां से आप बेस कैंप से कैंप 1 इज लाइक पहले आप ट्रैवर्स करेंगे. एक ट्रैवर्स करने के बाद एक सेक्शन आता है जहां पे आपको नीचे ड्रॉप करना है. यू ड्रॉप डाउन एंड देयर इज लाइक अ टेक्निकल पैच. वहां पे रॉक्स हैं एंड इट्स लाइक गुड टेक्निकल पैच. वहां से आप जाके एंड देन इट इज प्रीटी मच लाइक इंक्लाइन 25-30 डिग्रीज का स्लोप है एंड यू रीच कैंप 1. Right. और कैंप 1 इज अराउंड आई थिंक 6,000 meters क्लोज टू. Okay. वहां से फिर वहां से थोड़ा ग्रेडियंट बढ़ जाता है. लाइक देयर आर फ्यू सेक्शंस यू गो डाउन टू ट्रैवर्स एंड देन यू गो अप. Okay. यहाँ से थोड़ा टेरेन चेंज हो जाता है एंड लाइक इट बिकम्स अ बिट मोर चैलेंजिंग बट नॉट वेरी चैलेंजिंग. एंड कैंप 2 इज गुड. 6-7 6-8 पे कैंप 2 है हमारा. कैंप 2 अच्छा है. कैंप 2 इज वेरी गुड. देयर इज ह्यूज स्पेस एंड वेरी नाइस कैंप 2. Right. वहां पे हम लोग चुके थे एंड बेस कैंप से कैंप 2 इट टेक्स अराउंड 6 hours. 6 घंटे में हो जाता है. Okay. एंड देयर आफ्टर नेक्स्ट डे अगेन वी स्टार्टेड. कैंप 2 से हमें कैंप 3 जाना था. अब कैंप 2 से कैंप 3 लाइक इन अन्नपूर्णा ऑल्सो मेरे को ये चीज देखी थी कि जब सनलाइट व्हेन द सन इज वेरी स्ट्रांग ना इट डिहाइड्रेट्स मी वेरी फास्ट. लाइक माय Right. स्पीड बिकम वेरी स्लो. लाइक दिस आई लर्न इन अन्नपूर्णा ओनली बिकॉज बाकी छोटे माउंटेन्स में उतना फर्क नहीं पड़ता था बट वहां पे मुझे लगा यार sun is up and I cannot like push through. So it took me a Yeah. lot of time from camp 2 to camp 3 because sun was like burning. It took around I think 8 hours something. We reached camp 3. कैंप 3 से कैंप 4 छोटा रास्ता है. बहुत ज्यादा लंबा नहीं है वो. वहां भी सन बहुत स्ट्रांग था उस दिन भी एंड आई थिंक इट टुक अराउंड 6-7 hours. कैंप 4 is at around 7,500 meters. Right. Yeah, and like till now Kanchenjunga is like it's another 8,000 meters. Like it's long but वहां पे कोई डिफिकल्ट सेक्शंस बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं आते हैं. मतलब छोटे मोटे आते हैं बट इट्स ओके. नाउ फ्रॉम द समिट अटेम्प्ट जब आप करने जाते हैं दैट इज द क्रक्स ऑफ कांचनजंगा. लाइक द समिट इज इट्स वेरी लॉन्ग एंड यू स्टार्ट ऑफ इट्स एन एंडिंग. वो खत्म ही नहीं होता है. इट्स लाइक आप चलते जा रहे हैं. Right. सो हम लोग शाम को चले थे अराउंड 6:30-7 o'clock समथिंग वी स्टार्टेड. Okay. तो जैसे कैंप 4 हमारा यहाँ है एंड देन वी टेक ए लेफ्ट टर्न और लेफ्ट में हमारा एक ट्रैवर्स ऐसे आता है स्ट्रेट. हम जेंटल स्लोप है 25-30 डिग्रीज का. आई थिंक 2 घंटे तक इट्स प्रीटी जेंटल स्लोप एंड देन वी कट टू द राइट. वी ट्रैवर्स टू द राइट एंड देन अगेन वी गो अप. फिर यहाँ से स्लोप चेंज हो जाता है. यहाँ से ग्रेडियंट बढ़ जाता है अराउंड 35-40 डिग्रीज 50 डिग्रीज तक पहुंच जाता है. एंड यहाँ पे एक एक्चुअली मेरे को इंसिडेंट भी याद है. लाइक शेरपा हमारे आगे चल रहे थे क्योंकि 2-3 दिन से समिट नहीं हुआ था कोई भी. मतलब टीम नहीं आई थी. हमारी टीम ही उस दिन सिर्फ हमारी टीम समिट कर रही थी. Okay. तो हमारे 2 शेरपा आगे थे जो रोप क्लियर कर रहे थे क्योंकि रोप स्नो के अंदर दब गई थी. तो दे हैड टू पुल आउट द रोप एंड ऑल. Okay. वो लोग कर रहे थे एंड दे वर सिटिंग देयर एंड आई वेंट टू देम एंड आई आस्क्ड दाई हम लोग लाइक कोई फ्लैट सरफेस आएगा वेयर वी कैन लाइक रेस्ट एंड ड्रिंक वाटर एंड समथिंग. एंड ही सेड नो कुछ नहीं है. समिट तक ऐसा ही है. एंड आई वाज लाइक ओके ठीक है. तो वहीं बैठ के पहले पानी वानी पिया. मैंने कहा कि ठीक है स्लोप पे ही है पूरा. सो यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम कैंप 4 जब आप निकलते हैं ना कंचनजंगा के लिए देयर इज नो फ्लैट सरफेस. आपको कंटिन्यूअस स्लोप पे ही चलना है. स्लोप विल वेरी. पहले थोड़ा कम रहेगा बाद में स्लोप बहुत हो जाता है बट आपको कंटिन्यूअस चलना है स्लोप पे. और फिर उसके बाद आप चलते रहेंगे देन एक बिग रॉक सेक्शन आएगा जहां पे आप ट्रैवर्स करके एक राइट टर्न मारेंगे. Right. और वो राइट टर्न जब आप मारेंगे ना उसके बाद आप ऊपर देखेंगे तो आपको सिर्फ रॉक्स दिखेंगे. मतलब आपको आइस नहीं दिखेगा. यूजुअली माउंटेन्स के ऊपर मतलब आइस या स्नो मिलता है. यहाँ पे क्या आपको सिर्फ रॉक दिखेंगे. एंड दैट इज वेयर द लाइक रियल कंचनजंगा स्टार्ट्स. आई एम टेलिंग
कि वो जो लास्ट का 400 मीटर है, Starts. हाँ. इट इज रियल स्टफ. मतलब वही कंचनजंगा को आई थिंक इतना मुश्किल बना देता है, Okay. क्योंकि वो पूरा रॉक है. एंड लाइक आप क्रैम्पॉन्स पहने हुए हैं पहली बात. अब क्रैम्पॉन्स पे चलना, क्रैम्पॉन्स पहन के रॉक पे चलना, इट्स लाइक वेरी डिफिकल्ट. Very difficult. और Yeah. कंटिन्यूअस रोप भी नहीं लगी होती है, क्योंकि रोप छोटे छोटे सेक्शंस में होती है वहां पे, और हाँ. ऐसे करके आपको जाना है. बोल्डर्स रहेंगे एंड आपको यू हैव टू एक्चुअली लाइक यूज योर हैंड्स एंड एवरीथिंग टू क्लाइंब दोस रॉक्स, एंड दे आर बिग. हम लोग बात कर रहे हैं लाइक 8,200 8,300 मीटर्स एल्टीट्यूड की. सो एल्टीट्यूड भी अच्छा खासा किक हो चुका है वहां पे. Right. तो वो सेक्शन इज लाइक वेरी डिफिकल्ट. एंड आप वहां पे 200-250 मीटर चलते हैं, और वहां पे क्या है ना, वहां पे रोप्स बहुत सारी रहती हैं, ओल्ड रोप्स, न्यू रोप्स. सो हमारे टीम में एक बंदा था जिसके थोड़ी इंजरी भी हुई थी, बिकॉज ही पुल्ड ऑन ए ओल्ड रोप एंड द पिटॉन केम आउट. Oh. सो वहां पे वो एक थोड़ा चैलेंजिंग है. मतलब दिस इज लाइक प्रीटी मच गुड. वहां से चल के आप एक समिट तो बेसिकली स्ट्रेट रहता है, बट स्ट्रेट रास्ता नहीं है. आप आगे जाके रॉक में आपको राइट टर्न लेना होता है. यहाँ से राइट टर्न लेके फिर ऐसे घूम के एंड देन यू कम फॉर द समिट. सो जब ये आप घूमते हैं तो वो एक बड़े से रॉक्स दिखेंगे वहां पे, एंड यू कैनॉट सी द समिट. आपको समिट दिखता नहीं है, और वो पूरा एक्सपोज रिज है. तो वहां से कंटिन्यूस बहुत, मतलब विंड बहुत ज्यादा तेज रहती है, और हमारे टाइम में वेदर भी काफी खराब था. फोटोज भी ऊपर से हमें कुछ नहीं दिखाता, और पूरा वाइट आउट था. Right. तो अराउंड वहां से फिर हम लोग चल के जब हम लोग राइट टर्न लिया, तो उसके बाद बस एक पैच बचता है, सम 50-60 मीटर, 50 मीटर्स आई थिंक, और उसके बाद समिट है. तो वहां पे जाके आई वाज फीलिंग वेरी टायर्ड कि यार लाइक व्हाई इट इज नॉट एंडिंग एंड ऑल, एंड प्रीटी स्लो दैट टाइम. बट या देन उस समय भरत मुझे मिला, एंड भरत वाज सत्या, डोंट लूज योर माइंड. एंड आई सेड नेवर, दैट नेवर गोना हैपन. आई एम ऑलवेज लाइक स्टेबल. सो ये हमारी बात हुई भरत की, एंड भरत लेफ्ट, एंड देन आई क्लाइम्ड लाइक अनदर maybe 20 minutes, and we reached the summit. And summit was very special because this is the first summit, and Kanchenjunga, like it was very special. I immediately I was like, okay, I have come here. The first thought in my mind was that, okay, I have come here, now I have to return safely. Yeah. And I was not like very joyous. I was like happy, okay, very happy, but the first thing was that I have to return safely, जो कि बहुत जरूरी है. That's only halfway point. यस. Yeah. और यही मैं एम्फसाइज करना चाहूंगा कि आपको ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी है कि यू हैव टू कम बैक ऑल्सो. यू नीड टू हैव दैट मच एनर्जी. रीचिंग अप इज जस्ट हाफ वे, एज यू सेड, लाइक वो पूरा काम नहीं हुआ है. तो वो चीज पहले मेरे दिमाग में आया कि ठीक है यार, अब हमें वापस जाना है. वी क्लिक्ड वेरी फोटोज, वी हग्ड ईच अदर, माय शेरपा वाज देयर. एंड एक्चुअली मेरे पास कैमरा भी नहीं था वहां पे. मतलब इट वाज लाइक आई डोंट नो कैमरा कहाँ रह गया था. लाइक कैमरा नहीं था, एंड मेरे शेरपा के पास भी कैमरा नहीं था. सो वी आस्क्ड समवन एल्स टू टेक फोटोज एंड ऑल. इट वाज इंटरेस्टिंग. लाइक देयर वर टू मोर. I think someone already should be having an answer, क्योंकि अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि which cameras did you guys take? नहीं, I had cameras तो थे ही नहीं. हाँ. Okay, we'll come to which branch and all later on. Cameras, I'll answer that question. But cameras, yes, ये मेरा कैमरा रह गया था या I don't know, I somehow missed it. तो वहां पे हमने अच्छे फोटो खींचे, and we slowly came back. Coming back was like okay, decent. Coming back is like pretty much just slowly just keep walking, come down. That's it. Nothing special about Generally, it. And we कहते came. हैं कि 8,000 meters में especially like when you talk about Everest and other, जब आप stats की बात करते हो and the number of fatalities जो हुई हैं, वो ये कहते हैं कि maximum people die while coming down. So obviously वो complacency आ जाती है. As you said, you get very tired, you're sleepy because you have been on your feet for a long time. So how do you then manage that? Like, is there anything in terms of food or maybe mental work or something that helps you going down the way? Because कहने को तो ठीक है नीचे जाना है, but still it's a very very long way down that. Yeah, it's seriously long way. And आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि what keeps you going down, because अब तो आप जा रहे हैं तो एक टारगेट है माइंड में. So now like I'll tell you my personal experience, what I generally like.
when I'm going up, I'm not thinking anything else. Like mind में मेरे कुछ नहीं चलता है सिवाय like I have to take one more step. That's it. Like मेरा family or nothing. Mind is completely blank. But when I start coming down, then I always think, yaar, okay, I have to safely reach home, and that is a huge energy for me. Like when that thought comes, then there is no stopping. So एक चीज होती है इमोशनल स्ट्रेंथ, जिसकी हम लोग मैं बहुत लोग सुनता हूँ बात नहीं करते हैं. लोग मेंटल स्ट्रेंथ की बात करते हैं, फिजिकल स्ट्रेंथ, बट इमोशनल स्ट्रेंथ बहुत जरूरी है. कि आप जब ऊपर जा रहे हैं तो आपको उन इमोशंस को ब्लॉक करना है कि यार फैमिली है या बिकॉज यू कैन नॉट थिंक अबाउट दोस थिंग्स व्हेन यू आर गोइंग अप. देन be like a hindrance because आपका mind will try to stop you. But when you are coming down, those things become a huge inspiration. And I always think about my like family, my daughter and all, like and I slowly walk, and उस समय मैं सेफ्टी का ज्यादा सोचता हूँ rather than climbing with speed or something, क्योंकि स्पीड का तो कुछ है नहीं, हम तो ऑलरेडी सबमिट कर लिया है. Right. तो मैं उस समय सेफ्टी का बहुत ध्यान रखता हूँ. And mentally, yes, mentally तो आपको you have to be strong. You can never give up. Mountains give up मतलब लोग गिव अप का गलत मतलब समझते हैं. लोग सोचते हैं आप सबमिट नहीं किए तो दैट इज गिविंग अप. नो, गिव अप तब होता है जब आपने एक लाइन जो थी ना, जो आपको ऊपर नहीं जाना था, वो क्रॉस कर दी, वहां वो गलत हो गया. फिर गिव अप इन द सेंस कि आई हैव टू ब्रिंग माय बॉडी इन वन पीस डाउन. दैट इज व्हाट गिव अप मीन्स टू मी. अगर आपने वो नहीं किया देन सबमिट हुआ नहीं हुआ, सेकेंडरी. Right. And coming down is it's dangerous. Coming down is really dangerous. In fact, हम लोग भी avalanche में थे. Bharat and myself, we were standing in there, and the avalanche started rolling towards us, and there was a wet snow avalanche, and Happened on instantly. Kanchenjunga? This happened on Kanchenjunga or Annapurna? Kanchenjunga pe. Oh, right. And just maybe 30 minutes before Camp 1. मतलब 3-4 घंटे और 2 घंटे और तो हम लोग बेस कैंप पे पहुंच जाएंगे. मतलब उतना नीचे आ गए हम लोग. एंड लाइक वी थिंक नो कि अरे क्या नीचे आ गए, अभी तो सब सेफ है. एंड थिंग्स कैन गो रॉन्ग एनी टाइम. तो वहां पे एक एवलांच आया, वेट स्नो एवलांच, एंड वी आर लकी टू सर्वाइव. हमारा एंकर्स होल्ड किए, हम लोग ब्रेक नहीं हुए एंकर्स. बट यस, कमिंग डाउन इज डेंजरस. राइट. ठीक है. Coming, आपकी जो without oxygen वाली जो बात थी, your thing that you said that you were trying on Annapurna, that was a challenge. Obviously, for viewers, I think it's also to share that there is a whole school of thought among the mountaineering community that is the real way you climb a mountain without oxygen. एक school of thought है ऐसा. There are a few climbers that only believe in that. कि अगर climbing करनी है तो without oxygen, because otherwise then you are having help. So वो भी है. But आप कह रहे हैं कि now you're preparing well. So what kind of preparations are you doing now? Which makes you think that you will be in a much better position? Okay. First of all, like when we were climbing Annapurna, like जब मैं जिस point से वापस आया, तो I was feeling pretty cold. I was a bit slow, but मुझे breathing में कोई issue नहीं हो रहा था. तो मुझे बेसिकली समझ में नहीं आ रहा था कि व्हाट आर द साइंस कि आई शुड स्टॉप और आई शुड गो अप. तो वो चीज अब मेरे को क्लियर हो गई है. थोड़ा एक्सपीरियंस से मुझे वो चीज क्लियर हो गई है कि आई कैन नाउ जज कि विदाउट ऑक्सीजन जाएंगे तो क्या होने वाला है. वो पता होना बहुत जरूरी है. और दूसरा लाइक अभी हम लोग धौलागिरी का प्लान कर रहे हैं, एंड दिस टाइम ऑल्सो इट्स लाइक विदाउट ऑक्सीजन. So and this time it's summit. It's not a challenge or attempt or something. This time it's for the summit. Okay. So this time I have increased my training also. I am doing a lot of cardio. Like my main focus this time is on high intensity cardio. Like 1 घंटे का set. Like morning I work out in the evening also. So I have changed my workout a little bit. पहले क्या था, इतना structured plan नहीं था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि मुझे क्या चाहिए. Right. Now I know what it takes to climb that. So अब मेरा प्लान वैसा है. डाइट पे मैंने बहुत फोकस किया है, जो कि पिछले साल डाइट का फोकस बहुत मिसिंग था. लाइक आई वाज ईटिंग एवरीथिंग नॉर्मल इंडियन डाइट. अब थोड़ा सा उसको स्ट्रक्चर्ड कर दिया है कि जैसे मॉर्निंग उठेंगे 4:30 तो हम लोग कुछ खाएंगे, उसके बाद वर्कआउट करेंगे, एंड फिर आने के बाद थोड़ा खाएंगे, एंड लाइक आई सेग्रीगेटेड माय मील्स एंड एवरीथिंग. सो या दिस टाइम एवरीथिंग इज लाइक अकॉर्डिंग टू द प्लान, बिकॉज आई नो कि
व्हाट आई नीड, मतलब वहां पे हमें क्या जरूरत है बॉडी को, उस हिसाब से इस बार ट्रेनिंग चल रही है. सो या दिस टाइम आई एम प्रीटी होपफुल, लाइक दिस टाइम विल बी मच बेटर. वाओ, फैंटास्टिक. ठीक है. आई थिंक किसी का ट्रेनिंग के ऊपर क्वेश्चन था, तो आई थिंक दैट हेल्प्स. जो आपने बताया, आई थिंक दैट आंसर्स मच अ बिगर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, दैट क्या क्या कर रहे हो. ऑब्वियसली स्पेसिफिक्स में वी कांट रियली गो दैट व्हाट आर यू डूइंग एवरी डे, बट आई थिंक जनरली आपने ओवरऑल आइडिया दे दिया है. देयर वाज अनदर क्वेश्चन. हाउ डू यू ओवरकम समिट डे साइकोलॉजिकल फियर्स? Yes, psychological fears, actually you don't overcome them. See, like आप माउंटेनियरिंग की बात करें या किसी भी और एडवेंचर स्पोर्ट्स की बात करें, देयर इज ऑलवेज अ फियर. राइट. इवन लाइक मैं इसको बेस्ट एक्सप्लेन कर सकता हूँ अपने स्काई डाइविंग एक्सपीरियंस से. लाइक सोलो स्काई डाइविंग करते हैं, एंड आई हैव डन, एवरी टाइम आई जंप नो आई एम स्कैर्ड. लाइक इट्स नॉट कि अरे 4 बार जंप कर लिया तो 5वीं बार डर नहीं लगेगा. एवरी टाइम दैट विंडो ओपन्स ऑफ द प्लेन आई एम स्कैर्ड, बट आई स्टिल जंप. सो दैट इज व्हाट इट इज. डोंट फियर, तो रहेगा ही. मतलब वी आर ऑल ह्यूमंस यार. यू आर गोइंग टू क्लाइम 8000 मीटर समिट, देयर इज ऑलवेज अ फियर. बट डोंट लेट दैट फियर कैच यू. लेट दैट फियर गार्ड यू कि हमें सेफली करना है वो चीज. ट्रू. तो अगर मतलब लोग, आप सोचते हैं कि जो मेरे साथ चल रहा है ना, अगर कोई मेरा क्लाइंबिंग पार्टनर है, अगर वो मुझसे कहेगा कि मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता है, देन आई विल बी स्कैर्ड. कि यार डर लगना चाहिए भाई, थोड़ा डर जरूरी है टू कीप यू ऑन योर टोज, टू कीप यू अटेंटिव. कि यार व्हाट यू, अलर्ट इज द बेटर वर्ड. कि यार आप एक डेंजरस काम करने चाह रहे हैं, तो आपको थोड़ा डर होना चाहिए, जो आप अलर्ट रहें. So don't overcome, like don't think on those lines कि I have to overcome the fear. No, you have to deal with the fear. You have to maintain a certain level of fear. Okay, ये इतना है, and we will be cautious. We'll take all the precautions and we'll climb. But don't let that fear catch you. If that fear catches you, then it's problem. Ultimately, you are the boss, not the fear. That is the scenario. Then I think आपकी fear और आपकी anxiety will eventually overtake, and then you will not be able to move further ahead, because उस altitude पे अगर आप इतने anxious हो जाओ, over anxious, then I don't think your training or anything else really comes into play. Then your mind has complete control over. आपने मतलब you lose the control over it. यही होता है. Right. नहीं, वो fear वैसे like no, you cannot let that fear overcome. No. True. ठीक है. So ठीक है. How does one prep for the summit? Endurance, gym endurance. I think that has been answered. I think एक चीज उसमें आप maybe you can share a bit more about is that like lot of people I think choose करते हैं कि मैं यही वाला workout करूँगा. Like I'll only, let's say for example, run. Yeah, well, I'll only cycle. I'll only swim. सो मैं सिर्फ कार्डियो करूंगा, स्ट्रेंथ की तरफ फोकस नहीं है या कुछ ऐसा है. बट आई थिंक टू टेक ऑन दैट सॉर्ट ऑफ अ चैलेंज जिसमें आप ऑलमोस्ट 17-18 घंटे ऑन फीट हो फॉर समिट पुश एंड हाई ऑल्टीट्यूड, आई एम श्योर इट्स गोना टेक मिक्स ऑफ एवरीथिंग. तो आपने क्या क्या किया है फॉर कंचनजंगा, और आर यू चेंजिंग एनीथिंग नाउ बेस्ड ऑन योर लर्निंग्स फ्रॉम द पास्ट? Yes, yes, you are very right. Earlier, like पिछले साल की बात करें तो my focus was more on running. मैं रन ज्यादा करता था, and I was having weight running. मैं अभी भी weight running करता हूँ. But इस साल की बात करें तो it's a mix. Like I'll talk about 6 days. एक दिन प्रॉपर रेस्ट रहता है, एक दिन संडे को मैं कुछ नहीं करता हूँ. तो उसमें से 2 दिन में प्रॉपर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता हूँ. प्रॉपर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग विद वेट्स. ईच मसल ग्रुप टारगेट करते हैं, बाइसेप, ट्राइसेप, चेस्ट, शोल्डर, सब कुछ टारगेट करते हैं 2 दिन में. एंड द अदर 4 days इज कार्डियो. कार्डियो मीन्स रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग. यहाँ पे है नहीं स्विमिंग पूल, सो आई डोंट हैव ऑप्शन. बट या इफ स्विमिंग इज देयर देन यूज इट. एंड वेट ट्रेनिंग, मतलब सॉरी, ये लोड रनिंग या usually sorry for the interruption. I usually carry a backpack or a weighted vest, and like weighted vest I'll run, a backpack I'll walk through long distance. तो वीक में ये एक बार करते हैं, और ये मुझे लगता है बहुत जरूरी है, बिकॉज टू enable your shoulders to take that load continuously. क्योंकि आप अगर सबमिट करने जा रहे हैं, ओके, आपके पास अपना ऑक्सीजन बॉटल रहेगा, वाटर बॉटल रहेगी,
छोटे मोटे कुछ और सामान आएंगे, तो मतलब समझ लीजिए 10 किलो 10-12 किलो तो वेट रहे, 10 किलो वेट तो रहेगा, राइट, गिव और मतलब दैट इज ऑन, आई एम टॉकिंग ऑफ द मिनिमम साइड, लाइक इतना तो रहेगा। एंड प्लस योर बूट्स आर हैवी, योर क्रैम्पॉन्स आर हैवी, एवरीथिंग इज हैवी, सो उतना वेट बॉडी को कंटिन्यूअस लेके चलना है, लाइक फॉर 10-15 आवर्स, सो वो प्रैक्टिस होनी चाहिए। सो आई विल राइट, सजेस्ट कि आप या तो वेटेड वेस्ट ले लें, वेटेड वेस्ट से आप रनिंग करें। रनिंग में थोड़ा ध्यान रखें, वेट ज्यादा ना बढ़ाएं एकदम से, नहीं तो आपके नीज में इश्यूज आ सकते हैं। धीरे धीरे ग्रेजुअल वेट बढ़ाएं, और लोड फेरी कर सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई हिल है तो आप वेट लें और थोड़ा एक्सेस वेट लें यहाँ पे, और वॉक करें, क्योंकि वॉक करने में आप कितना भी एक्सेस वेट लें वो उतना प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, अनलेस आप डाउन हिल जा रहे हैं। यूजुअली लोग क्या करते हैं, वाटर कैंस लेते हैं, वाटर कैंस बैग में डाल देंगे, व्हेन गोइंग अप ऊपर जाके वाटर कैंस खाली कर देंगे, सो कमिंग डाउन यू आर लाइक बैग इज एम्प्टी। तो ये एक बहुत जरूरी चीज है। एंड यू हैव टू डू एवरीथिंग। आई विल सजेस्ट कि आप साइकिलिंग भी करें, रनिंग भी करें, एंड मैं तो रोइंग मशीन है, मैं वो भी करता हूँ। आई प्रीटी मच डू एवरीथिंग, but main focus is on cardio. Main focus is of course cardio, कार्डियो, and yeah, main focus cardio, और 2 दिन strength, and strength भी like everything high intensity. You cannot कि मतलब एक हमने सेट किया and we'll wait for 5 minutes, नहीं नहीं वो फिर you are like because mountaineering में ऐसा ही है। लोड, हाँ, हाँ, हमें कंटिन्यूअस चाहिए, मतलब ठीक है, आप समझ लीजिए अगर 10-12 घंटे हमें चलना है तो हमारी बॉडी कंटिन्यूअस उतना एनर्जी आउटपुट देना चाहिए। और डाइट अच्छी होनी चाहिए, डाइट पे बहुत ध्यान देना है हमें, वी हैव टू ईट अ लॉट, because I think, बिकॉज बॉडी शुड बी केपेबल ऑफ बर्निंग आउट दोज मच कैलोरीज। अगर हमें 10-15 हजार कैलोरी बर्न करनी है समिट अटेम्प्ट में, तो बॉडी शुड बी केपेबल ऑफ बर्निंग इट, तो वो चीज है। any special consideration, I think ये एक मेरा personal question है, जब आप when you're going for the summit, and when you are already, I think बहुत लंबा push होता है आपका from at least the final camp to the summit day and everything, what all do you, because the temperatures are very low, तो पानी भी जमता है, and obviously I think one thing is that you would be carrying flask जिसमें गर्म पानी होगा to sort of do that, but in terms of eating, what do you take for energy, for calories? सी एक्चुअली लाइक विल टॉक अबाउट कंचनजंगा ओनली, कम ऑन। तो हम लोग जैसे कैंप 4 से निकले ना, तो मेरे पास कुछ चॉकलेट्स थी, थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स थे, कैशू, एंड लाइक कैंडीज, यू कैन टेक एनीथिंग दैट इज हाई कैलोरी, बट ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। कुछ लोग एनर्जी जेल्स कंज्यूम करते हैं, तो कुछ लोग लाइक इधर कोक पीते हुए भी मैंने देखा है, लोग कुछ लोग कोक पीते हैं, एंड दैट इज फाइन, लाइक इट्स पर्सन टू पर्सन, बट यस यू नीड समथिंग टू ईट। लेकिन आप ऑन अ प्रैक्टिकल नोट आई टेल यू, लाइक कांचनजंगा हम लोग समिट कैंप से जब हमने शुरू किया था ना, उसके हम 2 दिन बाद बेस कैंप पहुंचे थे, तो प्रॉपर हमने खाना 2 दिन बाद ही खाया था। उसके बीच में हम लोगों ने ड्राई फ्रूट्स चॉकलेट खाई थी, एंड दैट इज इट। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड टू यू नो मेंटेन योर एनर्जी लेवल ऑन वाटर विदाउट हैविंग फूड, क्योंकि फूड इज लाइक माउंटेन्स में अब यू कैन नॉट हैव द लग्जरी कि नहीं मुझे खाना मिल ही जाएगा, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। बाकी चॉकलेट्स मेन है, चॉकलेट्स, ड्राई फ्रूट्स, यही सब खाते हैं। किशमिश, किशमिश इज अ वेरी गुड दिस थिंग, बिकॉज उसमें काफी स्वीट शुगर रहती है, एंड इट कंटेन्स लॉट ऑफ आयरन, ऑल्सो कीप्स द यू नो आयरन कंटेंट अप। दैट्स इट, इतना ही खा सकते हैं आप, क्योंकि इतना ही आप कैरी कर सकते हैं। उससे ज्यादा अगर आप सोचेंगे कि मैं इतना लेके जाऊंगा, नहीं होता है। You cannot carry that much food. Right. Because then the load and everything, and I'm sure other things also in consideration. ठीक है. In terms of आपके पास तो कैमरा नहीं था, but others around in different teams, what were they carrying? Like what lasts when you're going that high up? And plus, I think power banks तो पता नहीं काम करते नहीं करते after a point. When do they run out? How do you manage the backups and everything? So yeah. See, power banks, if you are keeping your power banks in the sleeping bag and inside your jackets, they'll work. They should be warm. You cannot leave them outside, then they will freeze. और कैमरास की बात करें तो लोग यूजुअली गोप्रो यूज करते हैं, गोप्रो, इंस्टा 360। मेरे पास, मैं ओलंपस का एक टफ सीरीज आती है TG6, वो मैं यूज करता हूँ ओलंपस का। इट्स फ्रीज प्रूफ, एंड लाइक आई लाइक टू यूज कैमरा। बाकी नहीं तो आजकल लोग पीपल यूज मोबाइल, सेल फोन्स आर लाइक द बेस्ट। सेल फोन्स बहुत अच्छी फोटोज लेते हैं। या एंड पावर बैंक्स टेंट के अंदर आप स्लीपिंग बैग में रखिए, दिल वर्क टिल कैंप 4 आल्सो, नॉट अ प्रॉब्लम।
only inside sleeping bag, not outside. Right. But उतना कोई ले नहीं जाता, like usually I don't carry because they are heavy, like power banks. True. They're heavy. If you have a backup battery, 2 बैटरी से काम हो जाए, like it will carry on. Right. There's a question by Ankit. Ankit पूछ रहे हैं कि one basic question you discovered by curiosity, but now having learned and done so much, what are 3 treks for beginners and how to go about it? Okay. See, boss, I'm not I have not done many treks, so I think Chetan might be better positioned to answer that question. But I tell you about treks. I went to Everest Base Camp, and we didn't take any agency. I went just by myself, and I took a friend of mine with me. He had no prior experience in trekking at all, like complete zero. Right. And we were just 2 of us, and we made it to the base camp. So what I'm trying to emphasize here कि अगर आपकी फिटनेस अच्छी है और आपका माइंडसेट बढ़िया है, सो ट्रैक्स यूजुअली 5000 मीटर्स तक एंड हो जाते हैं. वहां तक अगर आप अच्छी फिटनेस है तो आप कोई भी ट्रैक कर सकते हैं. बट ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन ऑल्सो. लेकिन अगर ट्रैक्स की बात करें तो जैसे मिनक्यानी, मैंने बोला था मिनक्यानी पास, इंद्रहार पास, ये सब बहुत अच्छे ट्रैक्स हैं स्टार्टर्स के लिए, क्योंकि ये लास्ट में इनका टेरेन भी अच्छा हो जाता है. दे बिकम अ बिट डिफिकल्ट इन द लास्ट, क्योंकि थोड़ा चैलेंज तो होना ही चाहिए. इट इज वेरी सिंपल ट्रैक, then how you will enjoy it, it has to be difficult. Yeah, but otherwise I think till 5000 meters you need physical and mental strength, and it is doable. Every track is doable. I think Ankit, I think he has given a good suggestion, Satyadeep, but I think what you can also do is you can start off with, if altitude scares you, let's say you don't have experience at 4000 meters, 5000 meters, you can always start with lower treks in the lesser Himalayas, maybe touch 3000 meters. At least go out. Start by doing a 2-day, 3-day trek, and then slowly, gradually increase the number of days. Because sometimes what happens is you go in high altitudes and generally treks बहुत लंबे होते हैं, and sometimes people get sort of a bit freaked out कि अरे तो बहुत ज़्यादा commit कर दिया. So maybe start with a slower one, something which is not very high, and once you like it, you sort of get a hang of it, then you can think of the high altitude. But I think EBC is definitely it's something a lot of people who are starting off also do it, because उसमें I think आप altitude थोड़ा सा gradually gain करते हो. So it's not all that suddenly आप Ladakh type के terrain में land कर रहे हो where everything is very high altitude. So in Nepal, that way you can go very gradually and safely, and you can trek that. So EBC could be a good choice, given the fact that you are fit, एक basic fitness है, and I think that's the thing. Another thing, I think some people ask us कि आपने basic course किया था, advanced course किया था, because you started off on a trek and then you thought of taking up mountaineering, then serious mountaineering, तो आपने सोचा कि ठीक है skills के साथ backup करते हैं उसको. But a lot of people today don't have the time to go for a month off and everything. If they want to try out mountaineering में आना चाहते हैं, तो what are the steps of doing that? Those people ना आपके पास अगर 1 महीना नहीं दे सकते आप, ओके नो प्रॉब्लम, तो आप जैसे छोटे ट्रैक्स पे जाते हैं, तो जब आप छोटे ट्रैक्स पे जाएंगे तो आपके पास गाइड्स होंगे, and you will have someone like the trek leader. He will be surely, I am damn sure he will be highly experienced guy. आप उनसे सीख सकते हैं. आप किसी ऐसे छोटी जगह पे जा सकते हैं, छोटे ट्रैक जहां पे टेक्निकल एस्पेक्ट आ जाए, मतलब जिसका एल्टीट्यूड बहुत ज्यादा ना हो, बिकॉज अगर आप एल्टीट्यूड एकदम से बढ़ाएंगे फिर टेक्निकल भी बढ़ा देंगे तो फिर वो ज्यादा हो जाएगा. तो किसी छोटे कम एल्टीट्यूड वाले पे जो टेक्निकल हो और जो आपके साथ गाइड्स होंगे, आई एम श्योर यू कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम देम. मतलब मैंने कोर्स किया है, आई एग्री, मतलब कोर्स से हमें बेसिक एक्सपीरियंस मिला और सेफ्टी एस्पेक्ट्स मिले, बट एक्चुअल एक्सपीडिशन ने मुझे जितना सिखाया है वो कोई नहीं सिखा सकता. तो ये मैंने काफी लोगों से सुना है एक्चुअली, the being out there practicing doing it, चाहे making mistakes or whatever, I think that is the best way to learn. yes so वो है. बट अगर आप जैसे छोटे ट्रैक्स पे जाते हैं, ऑलवेज टॉक टू योर गाइड्स. मैं बोलूंगा जितने भी आप ट्रैक पे जा रहे हैं, आप अपने फ्रेंड सर्कल से जाएंगे, ओके एग्री, यू टॉक विद योर फ्रेंड्स, यू एंजॉय, दैट इज करेक्ट, बट आप अपने गाइड से, ट्रैक लीडर से, इनसे जरूर बात करिए, इनसे सीखिए, बिकॉज दीज आर द पीपल हु आर स्पेंड देयर लाइफ्स इन इट. सो उनसे ज्यादा कोई नहीं जानता है माउंटेन्स को, और उनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं.
Yes. और छोटा छोटा टेक्निकल चीजें करना चालू करिए एंड ग्रेजुअली यू विल इंक्रीज इट. Right. ठीक है. Uh, yeah, I think we have answered the questions जितने भी थे. I think वो मैं ले लिया. I'll just give a check once again if there is anything uh, new. There's another question by Restless Nomad. I live in one of the flattest part of India. Apart from general training, can you please suggest me some mountaineering specific training that can be helpful up into the mountains? Yeah. Yeah, I think what he actually I means to say also is that live in, how he can yeah, train in his part of the place. Yeah. yeah, same is my condition also. I live in a flat area and I will suggest like weight training. Like आपको weight मतलब in the sense like you have to carry heavy packs. There was a time like now I don't carry that heavy. मतलब मैं छोटे टाइम के लिए करता हूँ. Gradually you can increase like 20, 25, 30, 35. I was carrying 35 kg weights and morning में 2-3 hours I just walk. Right. Because yeah, we cannot find a hill anywhere. So I think taking a heavy backpack, a more heavy than what actually you will take, that will compensate for the terrain. I Right. mean that can just simulate. Actual scenario तो कभी नहीं आने वाला है. But yeah, that is a way which I found helpful, and I I do think that still. challenges बढ़ा देगा. Yeah. They I carrying still do weight that. and yeah. Yes. Right. आप वेट कैरी करिए 35-40 केजी ले जाइए और लाइक ग्रेजुअली हाँ, Yeah. हर कुछ सब कुछ ग्रेजुअली करना है, True. True. एकदम से नहीं करना है, neither you injure yourself. True. ठीक है. I think that's about it from my side. Anything else you would want to add from your Kanchenjunga experience or all the mountaineering expeditions you have done, attempted, and a message for people out there who uh, are not yet were thinking of coming into climbing or trekking or want to look into outdoors but are not able to take the step or anything for them. See, I'll just say one thing, yeah, like go out. You have to let go of that fear of the unknown. Basically, लोग क्यों नहीं जाते हैं? मेरे तो like most people I suggest, I tell you most people why they don't go, because they have the fear कि यार वहां जाएंगे कैसे होगा, and most people say कि यार मेरा कोई friend नहीं जा रहा है तो मैं कैसे जाऊं. Right. So you have to let go of these things. See, ultimately you have to live your life. Okay, I agree, friends हो रहते हैं तो थोड़ा अच्छा रहता है, but बस आप अकेले जाना है तो अकेले जाइए, and like you have to go somewhere. You cannot live a life like we have what 70-80 years of life. Right. And like उसमें से 40 साल हम ऑफिस में निकाल देंगे. Like everybody is working ना, तो True. यार बाकी टाइम फैमिली में, तो फिर अपनी लाइफ के लिए अपने एंजॉयमेंट के लिए आपने लाइक क्या किया. सो मैं इसीलिए सजेस्ट करूंगा, माउंटेनियरिंग है नॉट ओनली एडवेंचर स्पोर्ट्स. मैं कर रहा हूँ आप किसी और स्पोर्ट्स या कोई और ऐसी चीज जिससे आप पैसा नहीं कमा रहे हैं, जो जस्ट यू आर डूइंग फॉर योरसेल्फ, ट्रूली फॉर योरसेल्फ. लाइक इफ यू वांट टू प्ले एनी अदर गेम, व्हाटएवर, लोगों के बहुत सारे हॉबीज रहते हैं. सो कुछ तो डिफरेंट करना चाहिए rather than just earning money. I'm not saying money is not important. Money is important, boss. क्योंकि माउंटेनियरिंग मैं भी कर रहा हूँ. I know how बहुत expensive महंगा it is. है. बहुत महंगा है. Mountaineering is true. But yeah, other than money, like सुबह से शाम तक हम सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं सोच सकते. That is that like mentality. I don't know. Maybe personally, I will never enjoy it. Yeah, I think that's a very important takeaway. एक और क्वेश्चन था छोटा सा, but I think we can take it about gears and equipment. Like what kind of gears do you use in terms of jackets and boots and shoes for something like an 8,000, और कहाँ से मिल सकता है लोगों को? For 8,000 meters, you will get everything in Nepal. Kathmandu is the best place to buy those things. And always buy standard equipments. Don't take risk at all, because आप 8,000 meters के ऊपर जा रहे हैं. And your equipment is very important and it has to be top grade. And personally speaking, I use millet के shoes, snow boots use करता हूँ. Right. And Sherpa एक कंपनी थी जो अभी बंद हो गई है, but they were very good. उसका मेरा स्नो सूट है, again very good quality. नहीं तो रैब है, Mountain Hardware, like there are companies if you search on Google, but don't compromise on gear.
नो वे। Right. मतलब आप कर ही नहीं सकते वो कॉम्प्रोमाइज। जो 5-6 अच्छी कंपनीज हैं आपको उनसे ही लेना है, नो मैटर हाउ एक्सपेंसिव दे आर। Right. बिकॉज रिस्क आपकी लाइफ का है सीधे सीधे। अगर True. आप गियर से रिस्क ले रहे हैं, सो Yeah. यू कैनॉट टेक दैट रिस्क। Yes. आप किसी भी चीज में पैसा कम खर्च करिए, वो चलेगा, गियर में नहीं। गियर आपको प्रॉपर ही लेना है। Yes. So yeah, I think that I hope that answers the question in terms of gears and equipment. ठीक है, I think that thanks a lot Satyadeep थैंक यू, for थैंक यू। coming, sharing your wisdom, experience from the mountains. I think बहुत ही अच्छा रहा, बहुत मजा आया, and ठीक या है, थैंक यू yes, चेतन, आई ऑल्सो एंजॉयड दिस कॉन्वर्सेशन, लाइक, या। okay, okay. Thanks guys, thank you for joining everyone, and we'll see you again next week. बाय बाय।